So today we had the first state executive meeting of National People's Party to discuss basically on two issues. One is regarding the party internal issues, where we discuss about how to go for the party's restructuring, and then 1 year action plan, the minimum action plan, and then we also discuss about for the visiting program of our national president and chief minister Konark Sangmaji. And then the second part of the discussion was basically the resolution. In that resolution, the member of the National People's Party, they have worked out the certain issues of the state, the vexed issues of the state. In the first resolution, we discussed about the deportation of Chakma-Hajongs from Arunachal Pradesh. In that resolution, the National People's Party resolved that the presence of Chakma-Hajongs in the state of Arunachal Pradesh is threat to the local indigenous, and it is creating law and order issues. It is enhance the criminal activities in the area where they are located, and it has led to the encroachment of national reserve forest, national parks, and many land of the locals. So the NPP stand that the deportation of Chakma-Hajongs should be immediately made from Arunachal Pradesh so that the indigenous people's right can be protected. And in the second resolution, we have moved for the Arunachal Pradesh SC students' education right in the education establishment. Because in our state, the vexed issue is that our tribal students of the state is not getting reservation in the admission for the higher education in the central institute located in Arunachal Pradesh. For example, recently we had an issue in the Rajiv Gandhi University, Rono Hill, where our students were deprived from getting seats in the PhD admission. So, in the same line, we have many more central universities and deemed universities in the state. Like in one example is Narist, and one more is TRIMS, the Medical College Naharlagun, and one is NIT, and some colleges like horticulture colleges are there in Pasigar. The NPP wanted, since our state is a 100% tribal state, and our peoples are very economically poor, so we should give an opportunity to get maximum number of admission in these respective centrally institute colleges and universities with a reservation of 25 to 30% provision. And then third resolution we moved today was regarding the amendment of Article 371H. So this is also a very important issues of the state, and we have taken up this for the interest of the state, because in Article 371H, at present, in the present provisions, has only quoted about the power of the governor with the law and orders, and then number of legislators in the assemblies. So there is no any specific provision to protect the tribal rights over the land, ownership right over the natural resource, and the product of the lands, and even the customary laws and our practices. So we want that this law should be constitutionally amendment, and inclusion of provisions to protect the tribal rights over land, ownership right over the natural resource, and the customary should be protected, should be valued. Like that of in Nagaland, this right is given, and in case of Mizoram, this right is given. So National People's Party of Arunachal Pradesh standard for the interest of the Arunachal Pradesh, this should be included in Article 371H. And the next issues that today we have discussed and resolved was regarding the codification of customary law. It is well known that in Arunachal Pradesh we have more than 26 tribes, and all the tribes has their unique system of giving justice, and unique system of their traditional practices, customary practices. But till today, it has been not documented. It has been not come into the written form. So our NPP stand for these issues, and we want that the government should take off with the law department
in codification of these customary laws and customary practices, so that it can be a reference for in the court of law. It can be reference in the judicial systems in discharging the justice to the our peoples. At the same time, our traditions or say our identity can be preserved. So this was the four major resolution today NPP has stand for the state of Arunachal Pradesh, and many of the citizens of Arunachal Pradesh, they may not knowing much about the NPP. The National People's Party of Arunachal Pradesh is a national party. It is not like any other regional party. This is the one party from the northeast which has got the status of national party. And this party work on the ideology of regional aspiration with national outlook. Our party value the regional aspiration of northeast, while we are going toward the national. And we work on the ideology of one voice, one northeast. In the sense that the National People's Party has a different priority sector of workings. Our priority sectors are like racial discrimination to the people of Northeast. If any citizen of the Northeast peoples is being discriminated outside the Northeast in any part of India, then this is the only one political party which take the issues and they stand for it and they try to give the justice to the victims. And we work on the sector of education because it's a changing society. Our party feel that to bring a change, this mindset of a person should be changed, and this mindset can be changed through education. So we value on the education, and our party want to work in the line of education is our priority sectors. Then we focus on the health, because the healthy citizen can make a healthy society. So if the Northeast is to be grow healthy, then citizen of Northeast should be healthy. In the same line, for the growth of the Arunachal Pradesh, we must have a healthy citizen, for which we focus on the health sector for its infrastructure development and other programs. At the same time, there is many more issues where we used to keep priority sectors, but for your information, I'm just highlighting this. So once again, I thank all of you, and I feel that the media is a third pillar of the democracy setup, where you convey message to the peoples. So I believe that the message of the NPP of Arunachal Pradesh will be conveyed to the large part of the Arunachal Pradesh through you, for which I feel obligation and thanks to you. Now I would like to switch on to my convener to speak out something, and if you have any questions regarding the resolution that we have moved today, the paper is available with us. I can give you the four resolutions and the other minute of the meeting, so one of you can receive this one. And in regard to this, if you want to go deeper, our technical experts are here, you can ask to them. Thank you. So please. We'll take questions now. Yeah. If you have any. कोई सवाल जवाब है ना? Since you have taken some resolutions, one of the most burning issues which pertaining to state, which is directly indirectly, it's corruption. Right now, the talk of the town is about the corruption being in the various departments, but particular to sports department. Sportsmen not getting the due. This particular resolution is missing in your discussion. So, what's your stand on this issue? On the sports issue or the corruption? See, if you have seen the four resolutions that we have adopted today in the state executive meeting, it's very clear these issues have a very long-term implications. All right, number one. Number two, and mostly it concerns our future generation and the younger lot. So therefore, in fact, you have rightly pointed out the corruption or scam related to job, like you said, it's not new to Arunachal, it's old. However,
with the coming of the Pema Khandu government, one of the most beautiful achievement was the constitution and institutionalization of Arunachal Pradesh Staff Selection Board, which was designed and was institutionalized with the basic objective to curb out the corruption in the job appointment. And to a large extent, I would say that it has achieved its objective. However, of late, 2 and 3 incidents as such has come out, and one which involved the staff selection board itself, where now government has already taken enough action. Now you're talking about sports quota. See, this has been in public domain for quite some time about the scam or the in the sports quota. It's not the mistake of the government policy. However, it's for the implementing departments or the implementing agencies to look into it. Now, say for example, now that you have raised, now if a sports person issues or give a certificate saying that I'm a judoka or I'm a karate gold medalist or silver medalist, now what is the proof for the department? Proof for the department is that a person brings a certificate. Now if you check the certificate, it's duly signed by the office bearer at the level of general secretary. Now what can department do? Right? Now certificate seems genuine because the genuine person has signed. Now, but it has come to our light now that those are the those kind of fake certificates are also being issued. Now, therefore, on hindsight, see, जब आप एनालिसिस करते हो तो जब पीछे मुड़ के देखते हो ना, लगता है कि ये करना चाहिए था. तो मुझे अब स्पोर्ट्स कोटा को लेके जो हो रहा है हादसा 2-4 जो हुआ है, उससे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स कोटा एक अच्छा पॉलिसी है, लेके आना चाहिए, लोगों को जेन्युइन स्पोर्ट्स पर्सन को देना चाहिए और सबका हक भी है. जैसे हमारे जो यामी है, आर्चरी के जो आर्चर है, she has spent 15 years of life playing that game. She deserved that position, but unfortunately she didn't get it, and her claim is that she didn't get it because of manipulation in the department. तो मुझे लगता है कि पॉलिसी अच्छा है, हर स्पोर्ट्स पर्सन को अपना कोटा मिलना चाहिए, जॉब कोटा, जॉब रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन उसको जो वेरिफिकेशन है कि ये सच है या गलत है, सर्टिफिकेट ओरिजिनल है या नहीं है, इस पे जरूर सरकार को फिर से विचार करना चाहिए, हर डिपार्टमेंट को विचार करना चाहिए, इंक्लूडिंग पुलिस डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो. और क्योंकि इस एक समय ऐसा माहौल बना था कि लोग कहते हैं कि टीचिंग में भी बहुत सारे फेक सर्टिफिकेट पे गए, बट दीज वर एलिगेशंस, देयर इज नथिंग कॉन्क्रीट केम आउट ऑफ इट. हाउएवर दिस टाइम इफ देयर इज एग्जांपल, दैट मीन्स जब धुआं निकल ही गया तो आग तो जला ही है. तो मेरे ख्याल से सरकार को भी एक बार फिर से देखना चाहिए कि यही सिस्टम को रखिए आप, उसको कैसे स्ट्रेंथ करना चाहिए, उसको रिव्यू करना चाहिए. ये हम लोग के विचार है. बट लाइक यू सेड, आज हमने इस पे कोई डिस्कशन नहीं किया स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग में, बट आपने जब मुद्दा उठाया तो ये हम लोग के पार्टी का ही है कि स्पोर्ट्स कोटा रहना चाहिए, स्पोर्ट्समैन को बेनिफिट मिलना चाहिए, वो भी अपना ज़िंदगी का आधा ज़िंदगी उसी में निकाल रहे हैं, तो उनका लाइवलीहुड वहीं से आना चाहिए, उनका जीवनी वहीं से चलना चाहिए. लेकिन गलत लोगों को स्पोर्ट्स कोटा के नाम में सीट अलोकेट नहीं होना चाहिए, उसको बंद करने के लिए सरकार को जरिया निकालना चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए. एंड दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व इन इट should be penalized, should be punished as per the law. सर, जैसे कि आज आपने रेजुलेशन लिया चकमा-हाजोंग के ऊपर, हाँ जी, और एक तरफ से सीएम और हमारे लॉन्ग लिस्ट में भी चकमा-हाजोंग को डिपोर्टेशन के लिए तैयारी में कर रहे हैं. तो और दूसरी ओर ये चकमा-हाजोंग का कहना है कि वो लोग यहाँ पे अरुणाचल में more than 6 डिकेड रहे हैं, तो उनकी अपनी अटैचमेंट अरुणाचल के साथ में है. इसकी लाइक ऐसे पार्टी आप इसके ऊपर में क्या टिप्पणी कहना चाहोगे? सर ऐसा एडिंग टू हर क्वेश्चन, अब तो रेजोल्यूशन तो ले लेंगे, रिपोर्ट करना चाहिए, तो अब का तरफ से क्या सपोर्ट रहेगा, सजेशन रहेगा इनको? तो मोर देन 60,000 जो पॉपुलेशन है हम लोगों का अनऑफिशियली, तो उनको कैसे अब
सपोर्ट करेगा कि वो डिपोर्ट करना चाहिए उन लोगों को, इस प्रकार से करना चाहिए। सर इसमें और एक मेरा क्वेश्चन, जैसे कि सर ने कहा कि हमारा एथिक्स का वो है कि वन वॉइस वन नॉट लिस्ट, जैसे कि असम ने भी वहाँ से डिमांड किया कि अरुणाचल में उनको देना चाहिए, तो सर ने कहा जैसे कि वन वॉइस वन नॉट लिस्ट, तो जब अरुणाचल अगर उनको डिपोर्ट करेगा तो असम तो उनको अगर मुश्किल होगा, तो सर किसको डिपोर्ट करेगा? नहीं चकमा-हाजोंग, तो कैसे करके आप लोग उसको, आपको तरफ से क्या सजेशन है? अच्छा, Let me include the question here. Okay. Since This question is going to be very big, wrong. So, apart from Chakma-Hajongs, kind of forcing to be included in Arunachal Pradesh and regarding to the border issue. So they are now taking up this Chakma-Hajongs issue, and now they are placing that this is the right time they want to get to the territory of Arunachal Pradesh. And what is your party's stand on this? Those tribes, 6 tribes which wanted to be inclusion in Arunachal Pradesh. तो पहले इसी से लास्ट सवाल से शुरू करते हैं। ये जो 6 ट्राइब है, अगर आप देखो तो देखिए, सरकार से जब बातचीत करते हो तो 2 तरीका है, आप पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर करिए या अगर आप सिविल सोसाइटी की तरफ से कर रहा है तो इसको लिखित में एक मेमोरेंडम दीजिए। नाउ टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन दैट वी हैव इन पब्लिक डोमेन, चीफ मिनिस्टर हैज क्लियरली सेड that he has not received any such demand. Number 1. Number 2, he also said that asking for PRC in Arunachal by these tribes in Lekang constituency is a non-issue. Now, he will not consider, because he said that government had the intention of giving them PRC. However, people of Arunachal have rejected it. Therefore, he is in no position to give it. Now, we also reiterate the same position like we had told you earlier. We are part of NDA government in Delhi. We are part of NEDA. We are part of government in Arunachal Pradesh. So therefore, we do not differ with the position of the government of Arunachal Pradesh on demand by these 6 tribes. I think you are talking on Morang, Motang and all. Yeah. So that's 1. 2. Insofar as the चकमा-हाजोंग इज कंसर्न, अगर ध्यान से देखो तो अगर आप लोग पॉलिटिकल न्यूज भी कवरेज करते रहते हो, व्हेन वाज द लास्ट विजिट ऑफ होम मिनिस्टर ऑफ now the home minister, then party president of the BJP, that time also it came up, he held a meeting with the representative, that time also they were told. now देखिए, अब अगर भारतीय जनता पार्टी जो चकमा और हाजोंग के हित में हमेशा खड़ा रहा है, वो अगर आपको बोल रहे हैं कि आपको अरुणाचल छोड़ के दूसरे प्रदेश में जाना है, ये नहीं बोल रहा है कि असम जाओ या मिजोरम जाओ या कहीं जाओ, लेकिन कहीं भी जाए तो आई एम श्योर दे हैव वर्कड आउट द मोडालिटीज, है ना। बिना मोडालिटीज वर्कआउट किए तो हम 770 लोग 1000 लोगों को तो जाने को नहीं बोलेंगे ना। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या क्या, तो अगर आज हम ये भी बोल रहे हैं कि चकमा-हाजोंग आप लोगों के ही हित में सीए लाया गया है, तो आपको आज सिटीजनशिप मिलने के कगार पे है, आप सिटीजनशिप ले लीजिए। और उनको ये भी रियलाइज होना चाहिए, अगर आप अरुणाचल में ही रहते हैं तो यू विल नॉट बी गेटिंग इट, राइट। अगर चकमा और हाजोंग में से अगर मिलना ही है तो कितने लोगों को मिलेगा? वही लोगों को मिलेंगे जो 1964-68 के बीच में यहां आया था, है ना। तो हम चाहते हैं कि इंसानियत के तौर पे, फ्रॉम ह्यूमैनिटी पर्सपेक्टिव ऑल्सो, आई थिंक इट मेक्स मोर सेंस फॉर दीज पीपल टू लीव द प्लेस। आई नो when we say deportation, it sounds very strong, it sounds very negative. However, it is in their interest, they should, they should gain Indian citizenship, and to gain that, government of India is willing to give them. They have already facilitated, they have already enacted a law, and they should take benefit, and they should quietly move out. So any more? हाँ जी, यूनिवर्सिटी और कॉलेज का। हाँ, अच्छा, हाँ, इस पे हम लोग कभी दूसरे दिन भी बैठेंगे, बट जस्ट टू गिव यू हाईलाइट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट विच इज वेरी क्लोज टू द कोर टीम ऑफ एनपीपी स्टेट लीडरशिप. दिस इज अबाउट द एजुकेशन, द APST's राइट्स इन एजुकेशन एस्टैब्लिशमेंट. व्हेन वी से अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब right in education establishment, we are talking about both
students and faculty members. Faculty when I say teaching and non teaching, ठीक है ना. तो अभी क्या हो रहा है, एक्चुअली दिस इशू हैज़ बीन अराउंड फॉर क्वाइट सम टाइम, बट अभी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहले हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक ही है था और एक ही है, और डीम्ड यूनिवर्सिटी अभी 2 है फिलहाल. तो आगे जाके भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आएंगे. तो अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेडिकल कॉलेज आने के बाद हमारा मेडिकल सीट्स जो कोटा सिस्टम है सेंट्रल के, वो ना के बराबर हो गया है. आई थिंक इट हैज़ बीन कट डाउन. नाउ लाइकवाइज अब नेरिस्ट है हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेज, और उसके अलावा भी NIT चल रहे हैं. तो लाइक उसमें भी कल को पहले तो अपना स्टेट का एक एंट्रेंस होता था, उसके थ्रू सीट्स एलोकेट होते थे. अब सीट सेंट्रल लेवल पे कम होता जाएगा. तो नाउ वी आर स्टूडेंट्स, आर यंगर जनरेशन, आर फ्यूचर्स चिल्ड्रन, दे हैव टू कम्पीट अमंग्स देमसेल्फ हियर इन अरुणाचल. बट अभी एक रिसेंट ट्रेंड जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में जो देखा गया है कि अब अरुणाचलीज आर ब्रैकेटेड अंडर ओनली 7.5% ऑफ कोटा एज पर द नॉर्म्स और डायरेक्टिव्स ऑफ द UGC, और बाकी 13% आपका SC का हो गया, 26% OBC का हो गया, बाकी जनरल का हो गया, है ना. तो मोस्ट ऑफ द सीट्स वी आर टोल्ड, बिकॉज वी हैड अ इंटरेक्शन विद द ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन लीडर्स हु इज स्पीरहेडिंग दिस protest against RGU. We had a meeting. We got to know from the APSU leaders कि जो अभी है मोस्टली जो अरुणाचल के जो स्कॉलर्स है PhD MPhil, वो जनरल कोटा में ही जनरल जो अनरिजर्व सीट पे compete करके जा रहे हैं. तो हम लोगों का जो एक पॉलिटिकल पार्टी जो अरुणाचल से लाइक आवर जनरल सेक्रेटरी सेड, वी आर अ नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल पार्टी which has been recognized as national political party. But however, we will stand for the regional aspiration. We will stand for the AP Arunachal NPP unit will stand for the aspiration of the Arunachali APST. We are very clear. We are a 100% tribal state. So therefore, what we are saying is कि जब सेंट्रल कोटा खत्म हो गया है, जब हमारे बच्चों को लड़के लड़कियों को यहीं पढ़ना है, यहीं के सीट चाहिए, तो जब आप सीट रिजर्व ही नहीं कर दे रहे हो तो बच्चे कहां जाएंगे. और हाउ मेनी ऑफ द चिल्ड्रन कैन अफोर्ड टू गो आउटसाइड. अरुणाचल में कितने लोग हैं जो बच्चों को दिल्ली बॉम्बे भेज सकते हैं. हमारे यहाँ गरीबी का पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है ना. तो उसको देखते हुए आज हमने ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट करा है कि केवल स्टूडेंट का ही नहीं, इवन फैकल्टी मेंबर्स का भी इंटरेस्ट को, जो राइट्स है ट्राइबल राइट्स को इंस्टीट्यूशन में मेंटेन किया जाए. ये ट्रिगर पॉइंट कहां से हुआ? RGU के PhD स्कॉलर्स के एडमिशन से लेके. आप लोग को शायद पता है, फिर भी जो पब्लिक के इंटरेस्ट में जब आप ये वार्ता, प्रेस वार्ता हो ही रहे, तो ऐसा है. इसमें आज RGU के कुलपति वाइस चांसलर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि UGC का नॉर्म है कि 7.5%, 13%, 26% जो कोटा सिस्टम वो इंप्लीमेंट होना है. क्या राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ये कुलपति के आने के बाद ये बना क्या? हम लोग का सवाल नंबर 1 नहीं. ये राजीव गांधी यूनिवर्सिटी इज देयर सिंस मिड 1980s. सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बन के पड़ा हुआ है और काम कर रहे हैं. कभी ये इशू नहीं उठा अरुणाचल में. आज पहला बार क्यों उठा? ये है मुद्दा. पहला बार इसलिए उठा कि UGC नॉर्म्स को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं. क्या पहले UGC ने डिमांड नहीं किया था कि हमारा ये गाइडलाइन है, आपको कोटा इंप्लीमेंट करना है? पहले भी डिमांड रहा है, लेकिन ये इशू कभी नहीं रहा है. क्यों नहीं रहा? बिकॉज ये वाइस चांसलर आने से पहले जो भी वाइस चांसलर रहा है, दे ऑल ऑफ देम वर सेंसिटिव towards the fact that Arunachal Pradesh is a poor state but 100% APST state, 100% scheduled tribe state, and it doesn't have scheduled caste or OBC. ये मामला को लेके, ये पॉइंट को लेके सारे वाइस चांसलर और अथॉरिटीज सेंसिटिव रहा है. बट इस बार लगता है कि वो सेंस और सेंसिबिलिटीज खो दिया है. वो आपाक हो गया अपने मस्त होके, वो पूरा लगा है अपने रूल नियम कानून चलाने में. तो ही नीड्स टू बी अवेयर कि यहां गरीब लोग हैं, आमदनी कम है लोग, पीपल प्रिफर टू स्टे एंड स्टडी हियर, एंड बिकॉज ऑफ विच वी हैव रेज्ड दिस.
ना अब ये कह रहे हैं कि नहीं, एक ऑर्डिनेंस आया, ऑर्डिनेंस के कारण पार्लियामेंट से नियम कानून बन के आ गए, इसलिए हम इंप्लीमेंट कराए, वो कह रहे हैं। लेकिन ऑर्डिनेंस यहां से ड्राफ्ट कौन करके भेजा? हर साल तो भेजता है, पहले के कुलपति रहते हुए भी वो ऑर्डिनेंस बना के भेजा गया था, वो ऑर्डिनेंस कभी लागू नहीं हुआ, लेकिन इस बार क्यों लागू हुआ? ये सवाल जवाब आप लोग को भी करना चाहिए। इसलिए हुआ क्योंकि इस बार जब ऑर्डिनेंस जो बनाया कमिटी वहां दिल्ली भेजने के, ऑर्डिनेंस बनाया, उसमें देयर वाज नो फैकल्टी मेंबर ऑफ अरुणाचल वाज इन्वॉल्व, मतलब एपीएसटी फैकल्टी मेंबर कोई भी इन्वॉल्व नहीं थे। तो इसी कारण से नॉन एपीएसटी वालों ने अपना इंटरेस्ट में ओबीसी और एससी वाले कोटा को भी इंप्लीमेंट कराने के लिए ऑर्डिनेंस मूव कर गया। अगर वाइस चांसलर के इंटेंशन ये रहता कि जो प्रैक्टिस, जो नॉर्म चला आ रहा है कि यहाँ पे एपीएसटी को बेनिफिट देना चाहिए, ये अगर उनका इंटेंट रहता तो ऑर्डिनेंस कमिटी में कम से कम एक एपीएसटी फैकल्टी मेंबर को तो रखता। तो उनका इंटेंशन ही नहीं था रखने का। तो आज तो आरजीयू में है, कल कहीं और होगा। हम नहीं चाहते कि ये हो। हम चाहते हैं कि अरुणाचल के लड़के लड़कियों को फायदा मिले, यहाँ के फैकल्टी जो काम करे उनको फायदा मिले, और हम एम्पावर्ड रहे। ये हम शेड्यूल ट्राइब को एम्पावरमेंट की भी बहुत जरूरत होता है, तो फैकल्टी मेंबर भी एम्पावर्ड होना चाहिए। तो इसी 2-4 ऑब्जेक्टिव को लेते हुए हमने आज एक रेजोल्यूशन मूव करा कि कोई भी इशू रहेगा एजुकेशनल एस्टैब्लिशमेंट, व्हेन इट कम्स टू द एम्पावरमेंट ऑफ द फैकल्टी मेंबर एंड द राइट्स ऑफ द स्टूडेंट इन रिजर्वेशन पॉलिसी, एनपीपी विल स्टैंड फॉर द एपीएसटी community. Right.